Namaskar friends, I'm back again with the next episode of Learning from the Panda or Learning the Panda Way. Just a small recap of what we have already covered in this. First thing you need is a very strong vision, an aim or a dream which you can visualize ultimately if you dream it in your life. Then next was that be persistent, be determined and be focused. The third point was that you should never quit when you are aiming, when you are working towards your goal. Now we come back to today's topic, which is very interesting, very close to my heart, and it has been very perfectly explained in the movie, which is believe in yourself. Yes दोस्तों, जब वो पांडा accidentally, though they say that there are no accidents, but हम जैसे लोगों के लिए it was an accident only कि साहब वो पांडा select हो जाता है as a dragon warrior. पर जैसे ही वो ड्रैगन वॉरियर के तौर पे सिलेक्ट होता है, ही स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग ऑन दैट, ही स्टार्ट्स वर्किंग आउट, ही स्टार्ट्स दे आर गोइंग इन द प्रैक्टिसिंग एरिया वेयर दे मेक और वेयर दे ट्रेन people, disciples in Kung Fu. But still that was not enough. Despite the training, Shifu takes him to the remote hill areas, and there he is trained for a quite long period of time with a precision, with an effective skill, and he see himself as a changed panda. वो सब होने के बाद भी जब वो वापस आ रहे होते हैं तो yes, he is bragging about himself. Yes, now I have learned Kung Fu, everything does that. He is very confident that I have learned Kung Fu now. But deep in his heart, when they start discussing, he says that I cannot win over my enemy, that is Tai Lung. उनके सामने वो पांचों के पांचों जो फ्यूरियस होते हैं वो Tai Lung के अटैक से घायल होके वहाँ पर आते हैं, और शिफू फिर उनको कहता है कि साहब आप लोग मारे भी जा सकते थे, दिस दैट ये वो, उसका एक नर्व अटैक होता है सर Tai Lung का. द विलन इन दिस स्टोरी. Rest of the story you should see yourself, but I'll just give you the relevant portions where my concept, that is, or the movie's concept, believe in yourself, comes and beautifully it touches your heart. The movie has done a marvelous job. Now the point is, after acquiring the skills, after building the team, after building the environment, still that panda is lacking into the conviction that yes, now he can counter the enemy. वो Tai Lung को मार सकता है. He doesn't believe in himself. But now Shifu, after the Uruguay's discussion with the Shifu, has started believing in पांडा. वो तभी पांडा को ट्रेनिंग में लेके जाता है. जब शुरू में जब यूरोगे की जो इनका स्पिरिचुअल गुरु हैं और शिफू की बात होती है, तो वो यही कहता है कि मास्टर, शिफू सेज कि मास्टर यू हैव सेलेक्टेड द रॉन्ग पर्सन, इट हैज़ बीन एन एक्सीडेंट. बट देन उरुग्वे सेज नो, देयर आर नो एक्सीडेंट्स. बट देन ही टेक्स वन प्रॉमिस फ्रॉम शिफू that you have to give me a promise that you will believe in panda, and if you will nurture him, if you will train him, he will become a successful Kung Fu warrior. Then there is a small argument also over this, but after that argument Shifu realizes yes, Uruguay is right. The argument goes like this, that everything is gradual, everything takes time, and whatever kind of belief you will have, the same kind of benefits you will get. He gives an example also that if you plant a peach seed
you will have peaches only. You cannot have apple or you cannot have oranges. Meaning thereby कि जिस aim में, जिस goal में, जिस east में, east is nothing but our goal. The kind of belief and trust we have, उसको हिंदी में श्रद्धा भी बोल देते हैं, unconditional love भी बोल देते हैं. The deep it is, the more it will be realized in our life. It will be realized in our actions. So they say that we have to firmly believe. Initially it was on the part of Shifu. Now the situation is on the part of Panda. Now Shifu is telling this fellow that there is a dragon scroll. वो ड्रैगन स्क्रोल के ऊपर बहुत पहले झगड़ा हो चुका है और एक वो पैलेस में बहुत ऊपर सी जगह पे बड़ी सेफ रखी होती है. वो शीफू उसको उतारता है एंड ही सेज कि साहब ये तो ड्रैगन वॉरियर के लिए पढ़ने के लिए थी, आप इसको पढ़िए एंड यू विल बी द ड्रैगन वॉरियर. तो साहब वो उतारा जाता है, उसको खोलता है. जब खोलता है तो वो देखता है कि इट्स अ ब्लैंक शीट. There is nothing written on that. Yes, it is a mirror-like paper. Only Shifu can see himself, or Panda can see himself. Now Panda and Shifu, they again have a discussion. Ki Uruguay must have done some kind of joke by giving a blank scroll. Dragon scroll must not be blank. But Shifu says no, the master was quite wise. If he has done this, there is a purpose behind this. But at that particular moment of time, they don't understand. Anybody is not able to understand that. Now the Thailong is coming near to the village. So everybody decides that except Shifu, who will take care of the Thailong for some time, everybody will move out with all the population outside the village and they'll go in some remote area where probably Thailong cannot find them. So they start moving. Now the mother of Panda is along with her. They are talking, she's talking about noodles all the time because her life is revolving around noodles. She says that I want Po नाम होता है जो कुंग फू पांडा का. I want to share my secret noodles with you, special noodles with you, because the whole town is mad about the ducks or the mother of the Po noodles. अब वो सब he becomes very curious कि okay mother, now you should tell me. The mother is also very interestingly shares that in fact Po, there is no secret ingredient, there is no secret in my recipe. Only thing is, when you make something, you have to believe that it is special. Now I'll give you a similar example. आप रेस्टोरेंट में, होटल्स में, बहुत जगह पे जाके बाहर खाना खाते हैं, पर जब आपके घर में आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है और जो उसका स्वाद आता है वो किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के खाने में नहीं आता. Why? Because when the mother prepares the food, तो उसमें स्वाद, सार, संस्कार और जो प्रेम है, वात्सल्य है, ममता है, जो वो उस खाने में स्थापित हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, उसका स्वाद बाहर के किसी भी होटल के खाने में नहीं होता है. इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले उसको नमन करने की प्रथा है. What I'm trying to say is कि किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए, be it any event in your department, be it any activity in your department, be it even your assignment, be it in your daily routines, you have to believe that now you are going to do with the utmost faith, with the utmost trust, and eventually you will see that those things turn out to be the best things and they become best memories for you. Even if it is clicking a photograph, even if it is making a movie, even if it is making a video, anything which you can do
with the lot of trust, gut feeling and believe in yourself, the outcome is going to be beautiful. मेरा एक स्टूडेंट है, आई विल नॉट नेम हिम इन द वीडियो, वो सब मंदिर में उनकी एक ड्यूटी है. क्या ड्यूटी है? कि वो शिवलिंग का श्रृंगार करना. एंड देयर आर अदर बॉयज ऑल्सो हु हैव बीन गिवन दिस टास्क. आई कैन सी ऑन हिज फेस व्हेन ही सेज दैट सर हम वहाँ पर श्रृंगार करते हैं भोले शंकर का. जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस प्यार से वो करते हैं, उसके बाद एट टाइम्स ही सेंड्स मी अ पिक ऑफ दैट पर्टिकुलर श्रृंगार दर्शन. इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो ब्लिसफुल कि आपका मन करता है कि उसको अपने मन में सदा के लिए बसा लो सब. नाउ व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं बिलीव है, कहीं ना कहीं श्रद्धा है, कहीं ना कहीं प्यार है. यही श्रद्धा, यही बिलीव, यही प्यार आपको अपने प्रति, अपने एम के प्रति होना चाहिए. द मोमेंट यू स्टार्ट, अदरवाइज you will find on YouTube other things that what is the secret of this, what is the secret of this. Secret is a misnomer. जो चीज़ आपको जब तक पता नहीं है तब तक उसको सीक्रेट कहा जाता है. जिस दिन आपके लिए पता हो गई वो चीज़, it is no more a secret. Secret is anything which you are oblivious of, nothing else. You can share, you can take it, you can get it from any other people. And secrets are not very technical things, very complex things, very hi-fi things. They are simply the knowledge shared with a high belief system. You must have seen, जब आप एक अच्छे टीचर से सीखते हैं तो आपके मन में वो चीज़ें घर कर जाती हैं. वही आप किसी ऐसे व्यक्ति से सीखते हैं जो कि उस विषय पर महारत नहीं हासिल कर सका या उस विषय को अपने लाइफ में धारण नहीं कर सका, तो वो आप सुनकर भी आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स, वो नॉलेज आपके बीच में प्रतिष्ठित नहीं होती. सो किसी भी नॉलेज को, किसी भी सीक्रेट को आपके दिलो दिमाग पर प्रतिष्ठित होना बहुत अनिवार्य है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत अनिवार्य है. सो फ्रेंड्स, व्हेन दिस फेलो टॉक्स टू हर मदर एंड शी सेज देयर इज नो सीक्रेट एंड ही रिलेटेड विद द ड्रैगन स्क्रोल. वो ड्रैगन स्क्रोल से कहता है कि यस, नाउ आई गेट द पॉइंट. बाय हैविंग ए मिरर like scroll, what Shifu meant, what Uruguay meant, that you have to believe in yourself and then you can win the world around, or you can win your aim, or you can achieve success in your goal. So friends, today's mantra is that for achieving anything, from tiny goal to bigger goals, you have to believe in yourself, you have to believe in your thoughts, you have to believe in your ideas, you have to believe in your karmas, and you have to believe in your powers also. Tattvamasi. Tattvamasi means you are me, Krishna says. That means you are infinite, you have immense potential, you are limitless. If you start, Shivoham also serves the same purpose. When Adi Guru Shankaracharya realized, तो उनके मुंह से ये निर्वाणाष्टकम निकला. वो कहते हैं कि मैं ही चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, and I'm nothing else. He goes on negating A, B, C, other things, all worldly things, all substances, all objects. And he says, I'm only Chidananda Swarup Shivoham, Shivoham, Shivoham. So start believing in yourself, start acting on your karmas, start acting on your goals. All the best. Thank you very much. If you like this video, kindly subscribe in and press the bell button also. Thank you very much.
and please give your comments also, so that we can give you more of similar topics, more of similar concepts in the coming videos. Thank you very much.